Bismillahirrahmanirrahim. The second lecture is about the web browser. Okay, so we had already studied this कि हमारे पास जो इंटरनेट है उसके तीन एसेंशियल्स है. हमारे पास उसमें से एक एसेंशियल जो था वो वेब ब्राउज़र भी था. So we'll be going through what a web browser is and some important examples of modern web browsers के कुछ examples भी हम देखेंगे इसमें. Okay, so a web browser acts as an interface between the user and the web server. अच्छा, what is an interface? Students हमसे अक्सर पूछते थे इंटरफेस क्या होता है. तो इंटरफेस हम we used to give them an example. I used to tell them कि what is the interface to this room? इस कमरे का इंटरफेस क्या है. तो we used to say सर आप बताएं. तो आप उनको इंगेज करें इस एक्टिविटी में कि आप इस कमरे के अंदर दाखिल किस तरह हो सकते हैं. तो जो सही तरीका है दाखिल होने का, इट इज़ द डोर. तो डोर इज़ बेसिकली एन इंटरफेस टू दैट रूम. तो अगर आपने इंटरनेट यूज़ करना है तो वेब ब्राउज़र इज़ अ डोर फॉर इट, एन इंटरफेस फॉर इट. इट ओपन्स एन अपॉर्चुनिटी कि आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं. तो अच्छा, इट्स अ वेब ब्राउज़र इज़ एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट रिजाइड्स ऑन अ कंप्यूटर and is used to locate and display pages. Okay, so it's basically a software application. It's an application that you install on your computer, and you can basically use it to somehow locate and display pages, somehow to go to a particular page and display that particular page. It accesses information provided by web servers. अच्छा, वेब सर्वर्स पे जितने भी डेटा होता है वो उसको एक्सेस करता है. अगेन द सेम कॉन्सेप्ट के इट्स एन इंटरफेस. रिट्रीव, प्रेजेंट्स एंड ट्रैवर्स इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑन दी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब. द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंटरफेस कि ये फंक्शनैलिटीज़ है कि रिट्रीव करता है, प्रेजेंट करता है, एंड ट्रैवर्स इंफॉर्मेशन. ट्रैवर्स मीन्स कि you can go through it, you can go through various web pages at the same time. Okay, this is an overview of कि एक scenario किस तरह होता है. So you have a computer, you have a browser on it, an application installed. What this application does, it provides an opportunity, an interface that you can connect to the web server. सही है. And you have a backbone network जिसको आप इंटरनेट कहते हैं. So it's an opportunity कि आप उससे डेटा ले भी सकते हैं, and you can also give back data to the web server via a backbone network, which is a internet in this case. Okay. एक हिस्ट्री है हमारे पास. हिस्ट्री में हमारे पास जो सबसे फेमस है तो हमारे पास जो इंटरनेट है, it's an invention of the late 20th century, like 1990s की invention है हमारे पास इंटरनेट. और हमारे पास इंटरनेट फर्स्ट जो हमारे पास जो वेब ब्राउज़र है, it was first created by Tim Berners-Lee, who was a British scientist, a computer scientist, and he invented it in 1991, 1992, and it was called Nexus. Nexus was the first web browser by Tim Berners-Lee. And this is a picture of Tim Berners-Lee with his famous Nexus web browser. Okay. So we have been through the history of it. Okay. The next web browser was Volva www, and it was launched in 1992. It's basically a history sort of it's providing you the background or the history of के first क्या था, second क्या था. तो first was Tim Berners-Lee ने लिखा था, फिर उसके बाद जो आया Volva लिखा गया था Pai-Yon Wee ने, who was a student of California University, Caltech का. And it was written also in 1992. तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि
इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब या कंप्यूटर जो है, तो इट हैज़ प्रोग्रेस सो फास्टली कि 1992 में इन्वेंशन होती है एंड वी आर नाउ इन 2023 एंड इतना वाइड स्प्रेड हो गया है इतने कम अरसे में. ओके, सो दिस इज़ बेसिकली. अच्छा, ये जो जितने भी हमने पढ़े हैं अभी तक, टिम बर्नर-ली का और ये जो दूसरा जेंटलमैन था पाई वॉन यी, ये जितने भी थे, तो दिस वर फॉर द ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स. ऑर्डिनरी मीन के लाइक दे वर नॉट फॉर द स्पेसिफाइड. मैक के लिए नहीं थे. मैक का एक अपना एक इन्वायरमेंट है. तो मैक ने जो पहला अपना जो पहला उन्होंने लिखा था वेब ब्राउज़र, इट वाज कॉल्ड सांबा एंड इट वाज also written in 1992 by Robert Callahan. ओके, हमारे पास कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स हैं जो हम करंटली यूज़ करते हैं. उनमें ओपरा है. ओपरा began in 1996 and they have been constantly upgrading it. और it works on Microsoft Windows, Linux पे भी काम करता है, and it even works on Mac and Android. It was written in C++ language. Okay, going to the next one. Microsoft Edge था. Microsoft Edge was basically previously known as Internet Explorer. तो उसको अपग्रेड करके, उसको चेंज करके, रीनेम करके हमने Microsoft वालों ने उसको Edge नाम दे दिया. And it was relaunched in 2016. It works on computer, Windows and also on Xbox. It's written in C++ language. Okay, Google Chrome है, सबसे फेमस है ये. Launched in September 2nd, 2008. It works for Linux, Macs and for Windows operating system. अच्छा, इस वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ हुए इसमें. C++ भी यूज़ हुआ है, Python भी यूज़ हुआ है, JavaScript भी यूज़ हुआ है एंड असेंबली भी यूज़ हुआ है. दिस इज़ द मोस्ट फास्ट एंड सिक्योर. सबसे पॉपुलर भी यही है आजकल के एरा में. एप्पल सफारी इज़ प्रोडक्ट बाय द एप्पल कॉर्पोरेशन, नॉट फॉर, इट कैन बी यूज्ड बाय अदर, बट इट इज़ अ पेटेंटेड एप्लीकेशन जो उसको ओन करता है. तो वो है एप्पल इंक. इसको एप्पल कॉर्पोरेशन जो है तो उसको ओन करता है. एंड इट्स रिटन इन C++, launched in 2003. And we have Torch. Torch is basically also a web browser, although not that popular. I think it has even faded away, but it's worth mentioning. और 2012 में लॉन्च हुआ था और it's for Windows as well as for Mac OS, and but it's not that popular. Okay, so what we have next is Firefox. Mozilla है हमारे पास. Mozilla was written in September of 23rd, 2002. It works for Microsoft Windows, Unix, Mac OS, Android and Solaris. Okay, written in C and C++, JavaScript and scripting languages such as CSS, XUL and XBL. अच्छा, now going to the next one. Okay, अच्छा, इसमें कुछ हमारे पास ऐसे है कि we have कुछ एक ही मतलब के सिंगल लैंग्वेज में रिटन है, जो पुराने वाले थे और जो नए वाले हैं, दे आर रिटन इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सो ये हमारे पास अब एक एडवांटेज है कि हम मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक सिंगल एप्लीकेशन बना सकते हैं. पहले हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं था हमारे पास. सो दैट्स इट फॉर टुडे.